Hello everyone, I am Dr. Pradeep Adaka and I teach agriculture optional for UPSC mains and Indian Forest Service. So I have started a new channel, and on this channel I will be posting videos covering the syllabus of various agriculture related examinations. This channel will be solely dedicated to agriculture subject. Alright, so today we are covering a very important topic, that is organic farming. So we'll be covering this different aspects of this particular topic. So we'll be covering the characteristics of organic farming. I mean, what is organic farming? We'll discuss in detail what are the characteristics. Okay, important points regarding the definition. All right, and we will look into some of the statistics related to organic farming. Then we will look into National Program for Organic Production (NPOP) and certification process. So we'll be discussing this particular topic in two videos. So I'll be making two videos. In the first video, we'll be discussing the characteristics and statistics. And in the second video, we'll discuss about the NPOP program and certification. All right, organic certification. So let us first look at PYQ that was in the examination. So it was in 2018 UPSC prelims examination, and so let us look at the question first. So it goes something like this. So with reference to organic farming in India, consider the following statements. So they're asking you to consider the statements and which of the following given statements are correct, is or are correct. So first statement. Okay, let us look at the first statement. National Program for Organic Production (NPOP) is operated under the directions, guidelines and directions of Union Ministry of Rural Development. अच्छा, फर्स्ट जो क्वेश्चन, फर्स्ट जो चॉइस है, इट इज आस्किंग एनपीओपी वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री. सो एक्चुअल में ये मिनिस्ट्री जो है रूरल डेवलपमेंट के नीचे नहीं आता है. कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी डाल सकते हैं. सो इट इज एक्चुअली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. ओके, तो कंफ्यूज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. सो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, बिकॉज इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. सेकेंड choice, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), it functions as secretariat for the implementations of NPOP program. Yes, this is true, it acts as secretariat. And third is Sikkim has become India's first fully organic state. So it was declared in 2016 as fully organic state, so it is also true. So out of the three, 2 and 3 only. So that was asked in 2018. So important topic hai. Again, there can be questions on basic concepts, right? So let us first discuss this topic in layman's terms. अच्छा, organic farming का मतलब क्या है? Before we enter into definitions and technical terminology, let us first discuss this topic in layman's terms. Organic farming. So what do you mean by organic farming? So in simple words, cultivation of crops or raising cattle, okay, without synthetic fertilizers, pesticides, drugs, etc. So to put it in very simple words, growing crops, okay, without pesticides, no synthetic fertilizers. ओके, अगर तुम कैटल रेज कर रहे हो तो यू कैनॉट यूज routinely the antibiotics or drugs. So when you are administering drugs to cure an animal, yes, अगर एनिमल बीमार हो जाता है तो क्योर करने के लिए तुम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हो, बट ड्यूरिंग दैट period you cannot sell its products or sell the animal as organic during the
period of administration of the drugs. Okay, and there is a certain withdrawal period also. जब तुम ड्रग देते हो तो लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब आपने किया था, लास्ट टाइम व्हेन यू एडमिनिस्टर्ड द ड्रग, उससे एक वेटिंग पीरियड होता है, देयर इज अ विड्रॉल पीरियड, right? Before that you cannot sell the milk from that particular cow or sell the meat from that particular animal. Okay, so in growing crops you cannot use pesticides, you cannot use synthetic fertilizers. Even genetically modified crops are not allowed. Okay, even genetically modified crops are not allowed. Now, so it is understandable, obviously pesticides, you should not use pesticides. Why? So pesticides, when they enter the plant system, so plants को अगर तुम स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड से, so pesticides will enter the plants, and from there if the residues persist, from there it will enter into the food chain. So animals खाएंगे, humans खाएंगे, so their health will be affected. So it is understandable that pesticides are not allowed. But why fertilizers? Fertilizers क्यों allow नहीं कर रहे हो? Now plants जो हैं, they take up fertilizers only in inorganic form. They absorb nutrients only in inorganic form. So जब तुम organic manure apply कर रहे हो, so if you are applying organic manure, even if you are applying organic manure, it has to be first converted into inorganic form. Organic manure है, so suppose nitrogen, how is nitrogen mineralized? So organic manure में तुम्हारा proteins है, right? Protein will be converted into amino acids, it will be broken down into amino acids. Amino acids will be converted into amines and ammonia, right? So later stages में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया और अमोनियम आयन, फिर यहाँ से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, एंड फ्रॉम हियर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा. सो प्लांट तो नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकता है. तुम्हारे ऑर्गेनिक मैन्योर में प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्गेनिक फॉर्म, वो तो इनऑर्गेनिक फॉर्म ही एब्जॉर्ब करेगा. सो how does it matter to plants whether the nutrients are coming from synthetic fertilizer or whether the nutrients are coming from organic source? It doesn't matter to plants. Then why we are not applying synthetic fertilizers under organic farming? See, it doesn't matter to plants, but when you dump large quantities of fertilizers, synthetic fertilizers, right, into the soil, it will affect soil chemical, physical and biological properties. Soil के health को long term में affect करेगा. So to protect the soil for sustainability of the agro ecosystem, synthetic fertilizers are not allowed. ठीक है. So when it comes to characteristics, so we are not so synthetic fertilizers, synthetic pesticides, even GM crops are not allowed. Even in the for cattle, you cannot routinely use antibiotics and drugs. When you are administering drugs to cure any animal, there is a certain withdrawal period, and during that period you cannot sell the product from that animal or the animal under label of organic farming. Okay, so these are the characteristics of organic farming. So basic simple layman language mein we have discussed what is organic farming, and now let us look at the technical definition. So let us look at the technical definition of organic farming. So it is a method of farming system. Now again I want to clarify something. So the term farming, whenever it is used, so farming, cropping, so दोनों अलग अलग terms हैं, they have separate meaning obviously. So whenever a term farming is used, so it is implied that multiple enterprises are there, yani crops, animal husbandry, where cattle, fishes, apiculture, sericulture, it may be involved. So multiple enterprises are involved. जब भी हम लोग farming बोलते हैं, farming is a lot broader term compared to cropping. Cropping में we are growing only crops, so agriculture crops or horticulture crops, but crops grow कर रहे हो. Farming में
animal husbandry and other branches of agriculture are involved. All right, so farming is a broader word when compared to cropping. Okay, so it is a method of farming system, so multiple enterprises, it is implied, which primarily which is primarily aimed at cultivating the land and raising the crops in such a way as to keep the soil alive. बताया था ना, synthetic fertilizers, we do not allow synthetic fertilizers under organic farming because soil health has to be maintained, and in good health. soil health issues हैं, इसीलिए हम लोग synthetic fertilizer को अप्लाई नहीं करते. And use of organic waste, so plant waste कंपोस्ट में कन्वर्ट करो, एनिमल वेस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर which is produced from the farms, that is actually used, right? So fertilizers या nutrients हम लोग जब बात करते हैं, so nutrients are supplied through manure, farmyard manure, compost, green manuring crops, biofertilizers, etc. Right, so here the nutrients are applied to the plants through these means. Crop rotation also, crop rotation with legumes, because legumes will fix atmospheric nitrogen, so nitrogen level will be improved. So legumes के साथ crop rotation भी हम लोग use करते हैं यहाँ पर. So aquatic waste and other biological materials along with beneficial microbes, so here biofertilizers are covered to release the nutrients to the crops. And अच्छा, जब क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो पेस्ट का भी प्रॉब्लम है. सो हाउ डू यू कंट्रोल द पेस्ट हियर? पेस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंट वेराइटीज यूज करते हैं. रेसिस्टेंट वेराइटीज, if you grow them, there is no need for application of pesticide, right? So use of resistant varieties under cultural methods, physical methods, or mechanical methods are used. Biological methods, where you are using an insect to control another insect. Insect parasitoids are used, or you are using bacteria or fungi to cause a disease in the insect. Biological methods of pest control. Then biological, physical, mechanical and cultural methods to control the pest. So pest control is done through these methods. Even crop rotation, वो भी cultural methods में ही आता है. Crop rotation to prevent the or to minimize the pest incidence. So this is a very broad definition of organic farming. हम लोग synthetic fertilizers इसलिए अप्लाई नहीं करते हैं ताकि सॉइल हेल्थ मेंटेन रहे, सस्टेनेबिलिटी, so you will get yield on sustainable basis for a long period, right? So that was a very broad definition. Now we have definitions given by certain institutions. So United States Department of Agriculture and FAO का जो definition है organic farming का, so let us look at that. It is a system which avoids or largely excludes the so it is a system which avoids or largely excludes the use of synthetic inputs, fertilizers, pesticides, hormones, feed additives, ये सब allowed नहीं है. And to maximum extent feasible, rely upon crop rotations, crop residue, animal manures, off farm organic waste, mineral grade rock additives. So we are not adding synthetic fertilizers or pesticides, so we have to use another source to apply nutrients. And for pest control we can go for biological and physical cultural methods, okay, and biological systems of nutrient mobilization and plant protection. So that was the definition given by USDA. Now let us look at the definition of FAO.
So it is a unique production and management system which promotes and enhances agroecosystem health, including biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. And this is accomplished by using on farm agronomic, biological, and mechanical methods in exclusion of all synthetic off farm inputs. So, inputs are basically synthetic fertilizers, जो भी fertilizers है, seeds है, pesticides, these are all inputs. So exclusion of all synthetic off farm inputs. So जो भी inputs farm के बाहर से तुम ला रहे हो and it is synthetic in origin, so they are excluded in the organic farming. So let us look at the characteristics again. So here, characteristics of organic farming. So you are applying nutrients through use of biofertilizers, right? Biofertilizers are used to supply the nutrients, and we are using crop rotations and applying organic manure, green manuring. All these uh, biological material is used, organic sources are used to maintain the long term fertility. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ऑब्जेक्टिव भी ये भी है, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना है. सो यू हैव टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी. Right. Then nitrogen self-sufficiency through use of legumes in crop rotation and crop residues, green manure, livestock manure, all that can be used as source of nutrients. So instead of synthetic fertilizer, we are using organic sources. Right. Even crop rotation is used where legumes will provide extra nitrogen because they can fix nitrogen. Then एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक. सो लाइफ स्टॉक को ना इंटेंसिव मैनेजमेंट, हाई कॉन्सेंट्रेटेड फीड देके, उसको एंटीबायोटिक्स देके, वो सब आप उसका जो फूड है उसको एडिटिव्स प्रोवाइड करके बहुत ज्यादा मिल्क यील्ड के लिए उसको इंटेंसिवली रेज नहीं करना है. वी हैव टू लीव देम इन देयर नेचुरल स्टेट. सो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कि उनको अपने नेचुरल स्टेट में ग्रेजिंग के लिए छोड़ दो. सो इन द इवनिंग यू कैन एक्सट्रैक्ट सम मिल्क. बट हम लोग प्रोडक्टिविटी के लिए वी वांट टू इंक्रीज द मिल्क यील्ड, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड केक्स खिलाते हैं उनको, राइट? ऑयल केक्स, वट एवर इज लेफ्ट पल्प उसको. देन वी एड एडिटिव्स. बहुत जगह पर हॉर्मोन्स भी देते हैं इवन कैटल को टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन. सो इट शुड नॉट बी डन. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग, it prevents all these things. So these are excluded from organic farming. So extensive management of livestock should be done, right? And paying full attention to evolutionary adaptation of animals and behavioral needs, right? उनको पास पास में रख के पूरा एकदम congested रख के, if you go to some poultries you will see इतने सारे चिकन को एक ही जगह पर इतने छोटे से स्पेस में रखा जाता है. एक्चुअली एरेशन नहीं होगा तो वहां पर डिजीज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्प्रेड भी जल्दी होता है डिजीज. So it is very difficult to keep the poultry farm clean if you place them. I mean, the number of chicken per unit area, it is limited. वो इतना ही चिकन को तुम इतने एरिया में रख सकते हो. बट जनरली जो पोल्ट्री फार्म के ओनर्स है, they don't follow it, तो नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, which increases the chance of disease spread. So we have to take care of all these things also. Extensive मैनेजमेंट करना, इंटेंसिव मैनेजमेंट नहीं करना है, राइट? वी शुड अलाउ देम टू ग्रो इन देयर नेचुरल कंडीशंस. वी हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ देयर बिहेवियर. आई मीन उनका वेलफेयर को देखना है, राइट? नाउ सम पीपल दे गो एक्स्ट्रा माइल. वो पंखे वंखे लगा के पूरा म्यूजिक भी लगाते हैं गाय का दूध निकालते टाइम पे. वो एक्सट्रीम है, वैसा नहीं. बट वी शुड take care of their welfare. We have to also take care of their behavioral needs, right, while rearing them. So attention to impact of farming system on the wider environment and conservation of wildlife and natural habitat. So this is also a part of organic farming. So तुम्हारा जो cultivation है, so your cultivation or your agriculture practice, how much of it is affecting द एनवायरमेंट. तो इसका फुटप्रिंट क्या है एनवायरमेंट में? सो इफ यू डंप
in traditional normal जो conventional farming है, if you dump lot of nitrogenous fertilizer, most of it is wasted. It will end up in ponds, causing the aging in lakes or your eutrophication. So what is the footprint of your farming, impact of farming on the environment? You have to also take care of that. So at least you should not create pollution. अगर तुम reduce नहीं कर सकते हो, तो at least you should not be contributing to the environmental pollution and causing the destruction of natural habitat. Then, and pest control कैसे करोगे? Another important aspect in organic farming is pest control. Crop production में pest, it causes around 10 to 15% losses every year. So pest control is very important. If you don't control the pest, yield will reduce. So synthetic pesticides तो तुम use नहीं कर रहे हो. So how will you control the pest? Using cultural methods, biological methods, physical or mechanical methods. We can use, we can control the pest. So these are the characteristics of organic farming. Now let us look at some data. थोड़ा सा data देखते हैं. Okay. Now this will help you for your examination. Let us check some data. Now first 3 points are basically continuation of your characteristics. So organic farming is a form of agriculture practice which uses natural methods of farming. Synthetic inputs को avoid करते हैं. They are excluded, right? Even genetically modified crops are not allowed. So no synthetic fertilizers and pesticides, and even genetically modified crops are not included in the organic farming. So genetically modified crops allowed नहीं है under organic farming. So use of green manure, because again you have to supply nutrients, you have to control the pest. So we depend upon green manures, farmyard manure, compost, biofertilizers, biological pest control, crop rotation and other cultural practices. So that was continuation of the characteristics. Now let us look at some statistics. So top 5 countries with largest area under organic cultivation. So top 5 countries with largest area under organic farming are Australia first, India, then Argentina, China and France. So this is the source. IFOM International 2025 का डेटा है. So IFOM International का है. So International Federation for Organic Agriculture Movement. So that is the full form. IFOM International 2025, that is the source. 2025 का डेटा है ये. So India second place में है with respect to area. Then India का actual area क्या है? 7.3 million hectares in 2024. 2023 में ज़्यादा था, 10 point something था, 10.1 or something. Now it has reduced in 2024. 4.5 million hectare जो है cultivable area है and another 2.3 million hectare wild harvest collection. So हम लोग जो minor forest products और जो collect करते हैं, so that is 2.3 million hectares. प्रोडक्शन टोटल अगर तुम देखोगे तो 3.6 मिलियन मेट्रिक टन. मेट्रिक टन बोलो या टन बोलो एक ही चीज है, मेट्रिक यूनिट्स में बोल रहे हैं. सो 3.6 मिलियन टन्स इन 2024. अगर एक्सपोर्ट अर्निंग्स की बात करते हैं, सो एक्सपोर्ट अर्निंग्स वर 494.8 मिलियन यूएस डॉलर्स. इट हैज आल्सो रिड्यूस्ड. ओके, सो इंडिया इज नंबर 1 इन ऑर्गेनिक फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स. ऑब्वियसली इतनी 1.5 बिलियन पीपल रीच होने वाले हैं हम लोग तो, एंड 50% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. तो हम लोग नंबर में तो हर चीज में ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली. सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट. सो इफ यू सी द पीवाईक्यू में थर्ड वाला जो ऑप्शन था वहां पर ये दिया हुआ था. सिक्किम इज द स्टेट विच इज फुली ऑर्गेनिक. सो 2016 में इट बिकेम फुली ऑर्गेनिक. नाउ देखो, नंबर नहीं पूछा जाएगा. जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स अवॉइड्स सच क्वेश्चंस वेयर देयर आर डेटा वाला क्वेश्चंस कम पूछते हैं. सो एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इफ यू सी स्टेट वाइज 2024-25 में एमपी लार्जेस्ट एरिया है उसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंदर, देन महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, राइट. मैक्सिमम प्रोडक्शन महाराष्ट्र, उसके बाद एमपी, देन राजस्थान. नाउ such questions
आर वेरी रेयर। ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे क्योंकि ये जो डेटा है ये चेंज होता रहता है, एवरी ईयर द रैंक में चेंज, फर्स्ट सेकंड पोजीशन ये चेंज होते रहता है। सो चांसेस आर दैट ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही रेयरली पूछे जाएंगे, नहीं पूछते हैं जनरली, बिकॉज ये कंट्रोवर्सी हो सकता है। अगेन एक्सपोर्ट में हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल, सीरियल्स एंड मिलेट्स, देन प्रोसेस्ड फूड, ऑयल, सीड्स एंड शुगर। ये वैल्यू के टर्म में है, टन्स में नहीं बोल रहे हैं, मिलियन डॉलर्स में। वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू में सीरियल्स एंड मिलेट्स। ओके, देन लेट अस कंक्लूड आवर फर्स्ट वीडियो विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेकंड वीडियो में हम लोग एनपीओपी एंड सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो advantages, more profitable, and again if you consider export earnings, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ज्यादा है लेकिन अर्निंग्स भी ज्यादा है। इफ यू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट इट इज मोर प्रॉफिटेबल। इट इज हेल्दी फूड, ऑब्वियसली नो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, वो नहीं होंगे तो हेल्दी फूड है। eco friendly, less damage to the environment, you are not applying pesticides. Whenever you apply pesticide 99% ends up in the soil, वो सॉइल को सॉइल में जाएगा। ओके, ओनली 1% रीचेस द टारगेट। जो पेस्ट को 1% ही रीच करता, बाकी पूरा तुम्हारा सॉइल में या प्लांट के ऊपर गिरेगा एंड इट इज डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट। सो eco friendly है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग synthetic fertilizers or synthetic pesticides. Then positive effect on the soil, obviously soil health will improve over long term. Soil health improve होगा because you are adding only organic material which is natural in origin and you are not supplying pesticides, so biological diversity will also increase in the soil. So overall it has positive effect on the soil. So that was the advantage part. Now coming to disadvantage, lack of knowledge. हाँ देखो, अभी भी बहुत सारे फार्मर्स हैं, दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द स्कीम्स और द नॉलेज रिगार्डिंग द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। उनको जो ट्रेडिशनल वे पता है वही फॉलो करते हैं। स्टिल अभी तो पूरा इंटरनेट एज आ चुका है, फिर भी lack of knowledge is one of the major problem in India, right? Then lack of penetration among potential customers. देखो डिमांड होगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगा। सो व्हेन यू गो टू मार्केट, एक जो दाल है अरहर दाल, सपोज योर पिजन पी, एक अरहर दाल है जो 1 kg 170 रुपए का मिल रहा है, और ऑर्गेनिक साइड में ही ऑर्गेनिक अरहर दाल है जो 240 का मिल रहा है। सो एक नॉर्मल कस्टमर क्या खरीदेगा? सो विच इज चीपर, राइट? ऑर्गेनिक तो उबाल के तो खाना है, राइट? सो इसका बेनिफिट्स क्या है, ओवर लॉन्ग टर्म हेल्थ को कैसे इफेक्ट होगा, ये अवेयरनेस प्रॉपर नहीं है, ये सब नहीं है, एंड कॉस्टली भी है भाई। सो ऑब्वियसली वी विल पिकअप द चीपर वन। 70-80 रुपए का मार्जिन है तो चीपर वाला ले लेंगे हम लोग, राइट? सो अवेयरनेस नहीं है कस्टमर के अंदर। जब डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होगा ये, सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, दैट मीन्स फार्मर्स विल स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एक लिमिटेशन है बिकॉज तुम्हारा जो फार्मयार्ड मैन्योर है इट इज कॉस्टली। सपोज तुम्हारा जो फार्मयार्ड मैन्योर होता है, फार्मयार्ड मैन्योर में नाइट्रोजन कंटेंट, द नाइट्रोजन कंटेंट इन फार्मयार्ड मैन्योर इज अराउंड 1% अप्रोक्सीमेटली। इट कैन गो अप टू 2% ऑल्सो, 1 to 2% के बीच में रहता है डिपेंडिंग अपॉन द मैन्योर। सो let us say 1%. On an average 1% is the nitrogen level in organic manure. Now to supply, if you are applying 1 ton of farmyard manure, it is giving you only 10 kg nitrogen, right? But if you have a urea bag, so 50 kg का urea bag है, 50 kg urea bag will give you 23 kg nitrogen because यूरिया जो है 1 kg में, आई मीन यूरिया का जो नाइट्रोजन परसेंटेज दैट इज 46%। सो 50 kg बैग तुमको 23 kg नाइट्रोजन देगा, एंड दिस इज वेरी चीप कंपेयर टू योर फार्मयार्ड मैन्योर। ये तुमको 2000 से लेकर 2500 के बीच में, समवेयर अराउंड, एक जो टन है इट कैन गो फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 2 to 2.5 K, इवन हायर भी हो सकता है।
So तुम्हारा cost of production is higher in organic farming. So that is also one of the limiting factor which is uh, not allowing the farmers to pursue. Then lower yields in the initial years. Starting में शुरू के 3 साल तो तुम्हारा ये ट्रांसिशन फेज होता है. Initial 3 years is the transition phase. You cannot sell your product as organic because you are still in transition phase. Starting के 3 years में तुम बेच नहीं सकते organic बोल के. Once certification is given, then you can sell your product as organic. But in the first 3 years, which is the transition phase, you will not be given certification, right? So whatever pesticide you have applied earlier, they are still present in the soil. So those pesticides have to be degraded into non-harmful byproducts, right? Pesticides, some of the pesticides, their residues can remain in the soil for long period, so they have to degrade. Okay, पहले जो अप्लाई किया था सडनली आज का आज तुम स्विच नहीं कर सकते. यू कैनॉट स्विच इट instantly. So whatever pesticides you applied in the previous season, they will be still present in the soil. Okay, so initially जब तुम पेस्टिसाइड्स ये अप्लाई करना बंद कर दे तो पेस्ट का डैमेज ज्यादा होगा. ये बायोलॉजिकल कंट्रोल, दिस इज अ स्लो प्रोसेस, राइट? द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सॉइल, इट इज ऑल्सो नॉट वेरी इमिनेंट. एकदम से नहीं होगा, तुम्हारा सॉइल हेल्दी नहीं हो जाएगा. सो इट विल टेक टाइम. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सी द चेंजेस. एकदम से नेक्स्ट सीजन में ही अच्छा यील्ड आ जाएगा बोलने से ऐसा नहीं होता. सो इट विल टेक टाइम फॉर द सॉइल हेल्थ टू बिल्ड अप. So you will see the positive effects after 4, 5, 6 years. तब तुमको इफेक्ट दिखने लगेगा. So that is also one of the reason why it is less popular. Then regulation, certification process, it is complex, costly. So these are certain reasons why it is not very popular among the farmers. Yes, जो progressive farmers हैं, they are taking advantage by exporting their produce and everything, but majority of the farmers को ठीक से पता नहीं है. All right, so that was regarding the characteristics and some statistics of organic farming in India. All right, so in the next video we'll discuss the NPOP and certification process. That will be all. Thank you very much.